it's a whole number, it's done. It's divisible by 1. If it's even, it's true. It's divisible by 2. Add the digits of number to see, it's divisible by 3. So most welcome to all of you on your YouTube channel Maths Can Be Fun. Today I'm going to discuss the poem, poem on divisibility rules, which help us to learn the divisibility rules easily and in funny way also. So let's start the video. Example, I will discuss the example of each and every rules, okay, and the rules are written in poetic form. So here I've written only 3 rules, rest are written in my mind. So I will write it later. After 3 I will write 4, 5, 6 and so on. So let's start. So if it is a whole number, it's done. It's divisible by 1. Means if a number is whole and you want to divide it by 1, means number अगर हमारे पास में एक whole number है और हमें उसे 1 से divide करना है, so it's already done. It's done by 1. Means 0. 0 divided by 1 is 0. Means no need to divide. It's already done. 246. When we want to divide it by 1, then we get 246 as quotient. Okay. So if it is a whole number, it's done. It's divisible by 1. And it's so easy. बहुत ही easy task. But I'm writing the poem, so that's why I written. So let's move to the next. If it's even, it's true. It's divisible by 2. If it's even, what does it mean? It's true. Means अगर हमारे पास में even number है, okay, so वो 2 से divisible हो जाएगा. Example, 18. So when we 18 is the even number. 18 is the even number, and we want to divide it by 2. So 2 1s are 2, 2 9s are 18. So when we divide 18 by 2, we get 9. हम 18 को जब 2 से divide करेंगे तो हमें 9 मिलेगा. Now 2 4 6 8. It's divisible by 2 or not? So in this type of question we will focus on unit digit. Okay, हम unit digit पर focus करेंगे. If the unit digit is even, अगर unit digit हमारा even होता है, if the unit digit is even, so the given number is divisible by 2. Okay, so yes, this number is divisible by 2. So 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. Similarly, 1 2 3 5. 1 2 3 5 is divisible by 2 or not? So 1 2 3 5 is not divisible by 2 because its unit digit is 5. So we just focus on unit digit. If it's even, so the number is divisible by 2, otherwise not. So what are even numbers? 0 2 3, 0 2 4 6 and 8. If we have unit digit with 0 2 4 6 and 8, it's divisible by 2. So 2 से divisible हो जाएगा. If you think 0 is even, yes, 0 is an even number. Why? Because it fulfills the definition of even number. A number which is divided by 2 is even. So 0, when we divide this and 0 by 2, so we get 0. It means 0 is divisible by 2. That's why 0 is considered as an even number. Next stanza, add the digits of number to see, it's divisible by 3. Yes. Let's see the example. So first of all, I'm going to the rest examples. Example for 3. For example, I have a number 195. So 195 is divisible by 3 or not? 195 3 से divisible होगा या नहीं होगा? So what we will do? Add the digit of number to see, it's divisible by 3. Means we add the digits of the numbers. So what we will do? 1 plus 9 plus 5. And what we will get? 9 plus 1 is 10, 5, 15. And we know that 15 comes in 3's table
or we, in other hand or in another way, we can say that 15 is the multiple of 3, hence 195 is divisible by 3. So what we will get after divide? So 3 ones are 3, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 1 carry, then 3 5s are 15, 65 will the answer. If we divide 195 by 3, so we get 65. Next, another example. Yes, of course. So, example number 1 of 3, then example 2, and example 2 I am going to discuss 5, 8, 5. Okay. So what? Okay, 5, 8, 5 plus 1. So what we will do? We will add the digits 5 plus 8 plus 5 plus 1, 5, 5, 10, 18, 19. So the sum of the digit of the number is 19. Okay. Means 19 is not divisible by 3. 19 is not a multiple of 3. That's why 5851 is not divisible by 3. Next, example number 3, one more, and the last example. I'm going to select, okay, 1, 7, 5, 5. It's fine? Yes, now. So what we will do? Add the digits. So 1 plus 7 plus 5 plus 5, and we will get 18. And we know that 18 is a multiple of 3. So 1755 is divisible by 3. So what will be the answer when we divide 1755 by 3? So 3 ones are 3, 3 5s are 15, carry 2, 3 8s are 24, 3 5s are 15. 585 will be the answer when we divide 1755 by 3. So this is the way to learn the divisibility rules. I hope this poem definitely will help you. अगर ये आपकी हेल्प कर रही है और अगर आपको ये हमारा पढ़ाना और ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स. यस, पड़ोसियों की भी कभी कभी मदद कर देनी चाहिए. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4. सो नेक्स्ट 4, if last two digit is a multiple of 4, it's divisible by 4. 5, if the number ends with 0 or 5, it's divisible by 5. If you check by rule for 6, if you checked by 2 and 3, you get 6 absolutely free. Okay, so let's examples. So example of 4. How to check the given number is divisible by 4 or not? So we just focus on last two digit. If the last two digit is a multiple of 4, or in other hand, if the last two digit is divided by 4, the whole number is divided by 4. For example, 64. So in this situation, because one more thing, divisibility rules plays important role for large numbers. जब हमारे पास में बड़े बड़े numbers हो जाते हैं, सब उस केस में हमें प्रॉब्लम आती है. ठीक है. बाद में अगर हम 4 की बात करें, तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको 2 से डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा ना. So it's divisible by 4 or not? So what we will do? 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 6 are 24. So when we divide 64 by 4, so we get 16, and so we can say that 64 is divisible by 4. So let's we move to the next example for large number, and we cross check 232. So 232 is divisible by 4 or not? So what we will do? We will focus on last two digit. The last two digit is a multiple of 4 or divisible by 4. So the whole number is divisible by 4. Means हम लास्ट के दो डिजिट पे फोकस करेंगे. सिर्फ लास्ट के दो डिजिट्स हमारे पास में 3 and 2 means 32, and 32 is a multiple of 4. It means 232 is divisible by 4. So let's cross check. 4 ones are 4, 4 5s are 20, and 4 8s are 32. So 58 is the answer. So when we divide 232 by 4, so we get 58. So 58 is the answer. Next example. Next example for this.
Okay, 3712. Again, 12. Last two digit are 1 and 2, which makes 12. So मीन्स दिस रूल्स हेल्प. अब इस तरह से नंबर है 3712. अब ये तो बड़ा नंबर हो गया, अब तो हमें पता ही नहीं कि 3712 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट फोकस ऑन द लास्ट टू डिजिट. लास्ट टू डिजिट 12 मल्टीपल है 4 का, और इन अदर हैंड दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं, 12 जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा. तो जो पूरा नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा. सो 4 8s are 32 and 4 9s are 36. 4 9s are 36, one carry, so now it's become 11. So 4 2s are 8, 11 minus 8 is 3, so 3 goes with 2, so it's become 32, and 4 8s are 32, so 928 is the answer. So when we divide 3712 by 4, so we get 928. So let's move to the next stanza. If the number ends with 0 or 5, it's divisible by 5. Means when we want to check the given number is divisible by 5 or not, so we just focus on the unit digit. If the unit digit is 0 or 5, means अगर unit digit हमारे पास में 0 हो या 5 हो, so जो given number होगा वो 5 से divisible होगा. For example 532. So 532 is not divisible by 5. Why? Because unit digit is not 0 or as well as not 5 also. So if we want to divide 532 by 5, so we get the answer in decimal. Okay, हमें decimal में आंसर मिल जाएगा. Divisibility means number should be divide without any remainder. Remember, divide होना चाहिए and totally divide होना चाहिए. Okay, so 532 is not divisible by 5. So if I write a 0 after 2, yes, now it's divisible by 5. Why? Because its unit digit is 0. So let's cross check. So 5 1s are 5, 5 1s are 5. Then what we will do? One more thing. बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर. ये तो मैंने इंसिडेंस नंबर ही ऐसा लिखा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्हें प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अब देखिए हमने 5 1s are 5, ये तो पूरा कट गया. ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर आया 3. अब 3 तो डिविजिबल नहीं हो सकता 5 से, मींस 3 जो है 5 से छोटा है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 2 डिजिट्स टुगेदर. मींस अब हम 32 एक साथ लेंगे. सो आपको परमिशन एट अ टाइम एक नंबर लेने की है ना, 2 नंबर लेने की नहीं. तो हम क्या करेंगे, जब हमें दूसरा नंबर सेलेक्ट करना होगा तो हम बीच में एक 0 लगा देंगे. इट्स गेटिंग क्लियर? यस. After putting the 0, we will move to the next number. 0 put करने के बाद में next number पे बढ़ेंगे. Then 5 6 are 30 and 2 goes carry. 5 4s are 20. So what we will get, 1064 is the answer. So when we divide 5320 by 5, so we get 1064. And 1064 is divisible by 5 or not? Yes, of course. No. Why? Because its unit digit is 4. Similarly, so what we will do in 5 rule, number should be ends with either 0 और 5. या तो वो 0 से एंड हो या 5 से एंड हो, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है. नेक्स्ट रूल नंबर 6, इफ यू चेक बाय 2 and 3, you get 6 absolutely free. Yes. So मीन्स अब अगर हमने गिवन नंबर को 2 से एंड 3 से चेक कर लिया है, सो नो नीड टू वरी, 6 फ्री में ही चेक हो गया, हमें मेहनत नहीं करनी. सो क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे और क्या करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6. सो आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल 3 9 and 0. So 390 is divisible by 6 or not? So first of all, we have to cross check. 392 must be divisible by 2 as well as 3. Okay? Means अगर हमें 6 की divisibility चेक करनी होती है, so हम 2 से और 3 से दोनों से divisibility उसकी चेक करते हैं. ऐसा नहीं होगा कि 2 से हो गया 3 से नहीं हो रहा है, या 3 से हो गया 2 से नहीं हो रहा है. Numbers should be divisible by both 2 and 3. Then it's divisible by 6. तब वो 6 से divisible हो जाएगा. So 2, yes, its unit place is 0.
It means 390 is divisible by 2. 3. 3 plus 9 is 12. 12 plus 0 is 12. 12 is the multiple of 3. It means the given number is divisible by 3 also. So 390 is divided by 6. 390 6 से divisible हो जाएगा. And what is the answer? 6 1 is 6. 6 6 is 36. 6 5 is 30. We get 65. It's getting clear. Now, one more example. One more example to check the divisibility rule of 6. And this time I'm going to take 3 1 4. Okay, 1 4 0 4 0. Okay, now let's 2 and 3. So we cross check. Numbers should be divisible by 2 as well as 3. So unit place has 0. It means the given number is divisible by 2. Okay, we have to write. Yes, we have to write. अगर आपने चिल्ड्रन अगर एग्जामिनेशन में है, then you have to write. Unit digit is 0, so it's divisible by 2. The sum of the digit is the sum of the, for example, 4 4 1 4 5 505 549 909 means the sum of the digit is 9. It means given number is divisible by 3. So 14040 is divisible by 6. So what we will get answer? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 goes carry. So it's become 26, 3s are 18. Then again 2 goes carry. 6 4s are 24 and 0. So we get 2340 as answer. Okay. So when we divide 14040 by 6, we get 2340. Okay. So let's move to the next rule, divisibility rule of 7. So twice the unit digit subtracted from remain. Sorry. Twice the unit digit subtracted from remain, you feel in heaven, it's divisible by 7. Yes, means if we want to check the given number is divisible by 7 or not. So I'm going to repeat the sentence or stanza again. Twice the unit digit subtracted from remain, you feel in heaven, is divisible by 7. Means 343 is divisible by 7 or not. Okay, 7 का divisibility rules थोड़ा सा typical होता है और बच्चे confused भी होते हैं. Because क्योंकि जो prime factorization जब हम कर रहे होते हैं ना, so 2 3 is fine, 4 not at all, 4 6 9 8 means इन सब के हमें इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है जितनी हमें प्राइम नंबर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है. तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स which help us to do the prime factorization. Okay, so don't leave the video. Okay, so let's 343 is divisible by 7 or not. So what we will do, twice the unit digit subtracted from remain. So we twice the unit digit, so 3 multiply by 2. So twice the unit digit, 3 2 is 6 and subtracted from remain. और जो बाकी बचा हुआ नंबर है हम उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 34 minus 6 is 28. You feel in heaven. That's why it's divisible by 7. 28 is a multiple of 7 or 28 divided by 7. That's why 343 is also divided by 7. Let's cross check. 343 is divisible by 7 or not? 7 into 7, 7 4s are 28, 6 goes carry, so it's become 63 and 7 9s are 63, so 49 is the answer. It means when we divide 343 by 7, so we get 49. Let's one more example. Now this time I'm going to take greater one, so just 6. Okay,
6, 6, 9, 2. Okay, now check. It's fine. ये number है. So what we will do? Twice the unit digit subtracted from remain. So we have twice the unit digit. So 2 2s are 4. Subtracted from remain. 9 minus 4 is 5. We get 6 and 6. Still we have confused. 6, 6, 5 is divisible by 7 or not. So what we will do? We will proceed the same step again. हम फिर से वही step फिर से repeat कर देंगे. So subtracted from remain. Twice the unit digit. 5 2s are 10. Subtracted. What we'll get? 6 and 6 minus 1 is 5. 56. Yes, 56 is the multiple of 7. 7 8s are 56. It means 6 6 9 2 is divisible by 7. ठीक है? So let's check what comes when we divide 6 6 9 2 by 7. So 7 with the 7. 7 9s are 63. 3 goes carry to 9, so it becomes 39. 7 5s are 35. 4 is remainder. 4 goes carry to with 2, so it's become 42. 7 6 are 42. So 9 5 6 is the answer. So when we divide 6 6 9 2 by 7, so we get 9 5 6. It's getting clear to you all? Yes? Okay. I hope so. It's clear. Next we move to the next rule, and the rule is for 8. If the last 3 digit is divisible by 8, it's divisible by 8. Means we have just focus on last 3 digit of the number. If the last 3 digits are divisible by 8, the whole number should be divisible by 8. So let's see the examples for divisibility rule of 8. So you have to write 792. So it has only 3 digits. Yes, so इस केस में तो हमें तीनों ही नंबर हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट, अब इसमें तो 3 डिजिट्स हैं, तो वी चेक द होल नंबर. सो हाउ टू चेक? वी हैव टू जस्ट सिंपली डिवाइड. तो सर फिर ये हेल्प कैसे करेगा? बेटा जब हमारे पास 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स का नंबर होगा, तो हमें उस पूरे नंबर को डिवाइड करने से अच्छा है कि हम लास्ट के 3 डिजिट से पहले क्रॉस चेक कर लें कि गिवन नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं. लास्ट 3 डिजिट आपको ये बता देगा कि जो 6 डिजिट और 7 डिजिट का जो बड़ा सा नंबर है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं. अगर लास्ट के 3 डिजिट हो जाते हैं तो मींस अब आप स्टार्ट हो जाओ, अब आप पूरे नंबर को 8 से डिवाइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट हो गए. दैट्स व्हाई. ओके, सो 8 8 1 8 8 9 72. ओके, व्हाट गोस कैरी? 7. then 8 9 72. yes, we get 99. So when we divide 792 by 8, so we get 99. It's means 792 is divided by 8. यहाँ पे तो डिवाइड हो ही जाता है 3 डिजिट से, तो उन्हीं को कंसीडर करना था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. 4 7 6 8. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो बिफोर स्टार्टिंग द ग्रेटर वन, मींस अब हम पूरे को ना कट करते, हम सिर्फ जस्ट फोकस ऑन 3 डिजिट्स. वी फोकस ऑन 3 डिजिट्स. हम 3 डिजिट पर फोकस करेंगे, और अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो जस्ट क्रॉस चेक. 8 से हो रहा है. 8 1 8 8 9 72. Okay, what goes carry with 4? 8 4, so it's become 48. 8 6 are 48. We get 96. It means 4 7 6 8 is divisible by 8. ठीक है, हमने लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करके ये चेक कर लिया कि होल नंबर डिविजिबल होगा कि 8 से नहीं होगा. ठीक है, so let's example or next stanza of the poem. Add the digit as 3. Add the digits as 3. It's fine, it's divisible by 9. नहीं, जैसे हमने 3 का रूल फॉलो किया था, we add the sum of, we find the sum of all the digits of the number. If the sum is multiple of 3, so it's divisible by 3. Similarly, we follow the same rule, but this time I'm going to check, or we will check the sum should be divisible by or multiple of 9. Okay, so let's see the examples. So I'm going to select the next. First example is 891. So 891
sorry, 891 is divisible by 9 or not. So we do follow the same, add the digit as 3. Okay, add the digit as 3. So means 8 plus 9 plus 1, we get 8, 9, 17, 118. And 18 is the multiple of 9. Yes, 9 twos are 18. It means the given number is divisible by 9. So we just cross check. 9 on the 9. 9 nines are 81. Okay, 9 nines are 81. When we subtract 81 from 89, then we get 8 as the remainder. So it's become 81. 9 nines are 81. So it's become 99. Next number 79947. Okay, 79947. Now, so we check this number is divisible by 79947 is divisible by 9 or not. So what we will do, find the sum of all digits. So 7 plus 9 plus 9 plus 4 plus 7. So what we will get? 7 9 16. 16 plus 9 is 25. 25 plus 4 is 29. 29 plus 7 is 36. And 36 is the multiple of 9. It means 79947 is divisible by 9. Okay. Let's cross check what we'll get the answer when we divide 79947 by 9. So 9 on the 9. 9 8 is 72. 9 8 is 72. So what is left? 7 is left. 9 8 is 72. Again 7 is left. 9 8 is 72. Then 2 is left. 9 3s are 27. 8 8 9 3. 8 8 8 3. Sorry. 8 8 8 3 is the 883 is the answer. So when we divide 79947 by 9, so we get 333 883 as quotient. Okay. Next, after 9, we know that 10. So let's move to the 10. So 10. It is the last stanza of the poem, and after this, I will discuss normally divisibility rules from 11 onwards. So let's see 10 in poetic way. If you get 0 at end, it's divisible by 10. Means it's so easy. So I don't want to waste time. For example, 109. 109 is divisible by 10 or not? So no, it's not divisible by 10 because its unit digit is not 0. So if any number wants to divisible by 10, अगर कोई number 10 से divisible होना चाहता है तो उसको अपने unit digit में 0 लाना होगा. Okay, it's getting clear. So let's move to the next rule, and the rule number for 11. Basically जो आगे की जो divisibility rules हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं. So अब वो शायद पोयम से तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज क्योंकि सर्च कर पाना ही बहुत मुश्किल होता है कि 11 तो मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक में, 13, 17, 23 मीन्स जो ऐसे नंबर्स हैं, मीन्स ये प्राइम नंबर्स भी, और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन में जब यूज होता है ना तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव. सो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11. Divisibility by 11. How we will check the given number is divisible by 11 or not? ये भी बहुत से बच्चों को पता होगा. मीन्स अब जो बड़े बच्चे देख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. So let's cross check what is the rule. For example, if we want to check 6017 is divisible by 11 or not, means ये जो given number है 6017 ये 11 से divisible है या नहीं है. So what we will do? We will find the sum of the unit digits and the odd digits. Means I am talking about the even places, means digit which comes in even places and the digit which comes on in odd places. So I am going to write the rule. Find the difference, or if the difference of, okay, if the difference of the
if the difference of the sum of even places, sum of even places and odd places is 0 or multiple of 11. Okay, means if the difference of the sum of even places and odd places is 0 or multiple of 11, it's divisible by 11. Okay, it's divisible by 11 means, so now I'm going to take 6017. 6017 is divisible by 11 or not. So what we will do, first of all we see what are digits in odd places. So this is the 1 is first place, second place, third place and the fourth place. So I mark the odd places. Now I'm going to mark the even places. Then what we will do, sum of odd places, sum of odd places. So what is the sum of odd places? 6 plus 1. 6 plus 1 is equals to 7. Then we find the sum of even places. Sum of even places. Sum of even places is 0 plus 7, that is 7. So then we find the difference. So 7 minus 7 is 0. So after finding the difference, if we get 0 or 7, difference find करने के बाद में 0 और multiple of 11, sorry it's a slip of tongue. So अगर हमारे पास में difference find करने के बाद में 0 या multiple of 11 आता है, 11, 22, 33, 44, 55, 66 and so on, so the given number is divisible by 11. So यहाँ पर difference कितना आ रहा है बेटा? 0. It means 6017 क्या होगा? 11 से divisible होगा. Let's cross check. 6017 by 11. So 11 was the 11. 11 5s are 55. 5 goes carry with this. Okay. Okay. 11 5s are 55. 5 goes carry with this. So what is left? 11 4s are 44. 11 4s are 44. 7 is left. Then 11 7s are 77. So 547 is the answer. So when we divide 6017 by 11, so we get 547 as answer. Next, one more example, then we move to the next rule. And next example is 282678. 282678. Now, this number is divisible by 11 or not. So what we will do, first of all we find the sum of odd places. So sum of odd places, so 2 plus 2 is 4, 4 plus 7 is 11. Okay, then sum of even places, sum of even places, 8 plus 6 is 14. 8 plus 6 is 14. 14 plus 8 is 22. Okay. Now the difference. So difference 22 minus 11 is 11. 11 is the multiple of 11. It means 282678 is divisible by 11. So let's cross check. It's divisible by 11 or not. And if it is divisible, yes, it is divisible. Sorry, it's divisible because rule is followed. Rule follow हो चुका है. So 282678 divided by 11. 11 with the 11. 11 2s are 22. What is left? What is 22? 6. 11 5s are 55. 7 is left. 11 6s are 66. 11 6s are 66. 10 is left. 11 9s are 99. 8 is left. 11 8s are 88. So what we will get? 25698 is the answer. Okay. Next, divisibility rule of
12. So I'm not going to discuss the divisibility rule of 12, because if you want to check the given number is divisible by 12, you have to just cross check the number must be divisible by 4 and 3. Okay, मीन्स जैसे हमने 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया था, 2 and 3 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, उसी तरह 12 की कंडीशन में 12 डिविजिबिलिटी रूल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन नंबर होगा वो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना होता है. ठीक है, बट अब इसके आगे से जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के वक्त फंसने वाले नंबरों की, और उस वक्त फंसते हमारे पास प्राइम नंबर. सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13. So divisibility rule of 13. After this, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट. ठीक है, बिकॉज क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, इवन डिवाइड नहीं होता है, और इवन हम सर्च भी करते हैं, बट कभी कभार हमें जेन्युइन और सटीक आंसर नहीं मिल पाता है. सो लेट्स divisibility by 13. So what we will do if we want to check the given number is divisible by 13 or not. So number, what we will do, multiply the unit digit. Okay, multiply the unit digit by 4. Multiply the unit digit. Multiply the unit digit by 4. Multiply the unit digit by 4 and add to the remaining, and add to the remaining number. Means हम जो गिवन नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देंगे. अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल हो रहा है तो हमारा गिवन जो बड़ा नंबर होगा वो 13 से डिविजिबल होगा. लेट्स क्रॉस चेक. आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. 767. So 767 is divisible by 13 or not. So how we will check? We will multiply the unit digit by 4. Okay, so multiply it by 4. 7 4s are 28 and add to the remaining number. Got it? Now 8 6 14, 4 carry 1. 7 8 8 8 2 10. 104. Yes, 104 is the multiple of 13. It means 767 is divisible by 13. So let's cross check. Okay, from this rules onwards, I'm not going to cross check. Okay, just I'm giving the example and I will show you the given number is divisible by 13 or not. सिर्फ मैं एग्जांपल्स लेकर के आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि गिवन नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट example 71474. Okay, 71474 is divisible by 13 or not. So what we will do, multiply the unit digit by 4. So we get 4 4 just 16. Add to the remaining numbers. 7 6 13, 3 carry 1, 4 2 6 1 7. Again it's not easy to check. So let's repeat the step again. हम फिर से स्टेप को फिर से रिपीट कर देंगे. 3 multiply by 4. 3 4s are 12. Then we add 8 6 plus 2 is 8. 1 1 2 and 7. I think so it's easy. No, if you're not able to give the answer, और अगर आप अभी भी एप्लीकेबल नहीं है कि 7 2 8 13 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो हम उसी रूल को फिर से फॉलो कर लेंगे. Multiply by 4. 8 4s are 32. Then 2 2 4. 2 plus 2 is 4, 7 plus 3 is 10. Yes, now it's done. Confirm? It's easy. So this is the way to check the given number is divisible by 13 or not. Next number, divisibility by 14 is not a prime number, 15 is not a prime number, 16 is not a prime number, 17 is the prime number. So I'm going to discuss the divisibility rule by 17. Means the given number is divisible by 17 or not. So what we will do, multiply the unit digit by, if you want to check
the given number is divisible by 17 or not. So multiply the unit digit by 12. Multiply the unit digit by 12 and add to the remaining and then check. Okay, with the same. So 9, 8, 7, 7. So 9, 8, 7, 7 is divisible by 17 or not. So what we will do? Multiply the unit digit by 12. हम 12 से unit digit को multiply करेंगे. Okay. Now, so when we multiply 7 by 12, so what we will get? So when we multiply 7 by 12, then we get, okay, it's mean we multiply 7 by 12 and add the product to the remaining number. So 12, 5 is 60, 12, 7 is 84, okay. 7 plus 4 is 11, carry 1. 8, 8, 16, 16 plus 1 is 17, carry 1, 9, 1, 10. Now, still you are not able to reply 1071 is divisible by 17 or not. So we do the same thing again. Multiply the unit digit by 12. So 12 was a 12, add in remaining number. So 7 plus 2 is 9 and 0 plus 1 is 1 and 1. 17, 7 is 119. Yes, 119 is the product of 7, is a multiple of 17. It means 9877 is divisible by 17. 9877 17 से divisible होगा. Let's move to the next rule. For 18 is not a prime, 19 is the prime number. So how to check the given number is divisible by 19 or not? So what we will do, multiply the unit digit by 2. Yes, twice the unit digit and add to the remaining. अब हम यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे और फिर हम उस प्रोसीजर को, जब तक हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल जाता है, जब तक हम आंसर नहीं बता पाते या जब तक हम अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, बिकॉज क्योंकि अब कभी बड़ा नंबर है, अब आपको 19 का टेबल ही नहीं लाना है, तो प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है. तो मीन जब आप इस बात को जस्टिफाई कर सके यस, सो आप उसको क्लियर कर सकते हैं. सो लेट्स क्रॉस चेक. आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल. 19, 1, 2, 3, 5. So 1, 2, 3, 5 is divisible by 19 or not? So multiply unit digit by 2. 5 2s are 10. Add 3 plus 0 is 3. 2 plus 1 is also 3 and 1. 133. 133 is the multiple of 19. How many times you multiply 19 to get 133? Yes, 7. You have to just cross check. 7 9 is 63, carry 6, 7 is 7 6 30. Okay, you must to learn tables up to 20 minimum. Okay, so 133 is the multiple of 19. It means 1 2 3 5 is divisible by 19. Let's move to the next prime number. So the next prime number, 20 is not, 21 is not, 22 is not, 23. So let's cross check and see what is the divisibility rule of 23. Okay. So if you want to cross check how, if you want to check the given number is divisible by 23 or not, so you multiply the unit digit by 7. Multiply the unit digit by 7 and add the remaining. Okay, I am little bit in speed. मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ बिकॉज क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये कोई किड्स के लिए नहीं है, 6th 7th 8th वाले बच्चों के लिए भी नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज क्योंकि उनके पास में इतने लार्ज वैल्यूज नहीं आती हैं. ओके, सो और जो बड़े बच्चे हैं वो इतनी स्पीड में तो पढ़ ही सकते हैं. अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो बैक करके भी देखिए ना. सो लेट्स क्रॉस चेक. 23 3381. So 3381 is divisible by 23 or not? So multiply the unit digit by 7. So we multiply the unit digit by 7. Now 7 1 is 7,
add to the remaining 7, 8, 15, 5 carry 1, it's become 4 and 3. Now again we are not able to reply, so again multiply by 7 the unit digit. 7 5s are 35 and add it, then 5 4 9 and 3 3 6, okay, 69. So 2 times when we multiply 23 by 3, sorry, so 3 3s are 9 and 3 2s are 6, so 69. It means 3381 is divisible by 23. These are very easy because क्योंकि अब आपको 11 तक था, 12 13 ऑनवर्ड जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब का सिंपल सा एक कंसेप्ट वर्क कर रहा है. एक पर्टिकुलर नंबर है जिसको हम यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर्स में ऐड करेंगे, एंड जो सम होगा अगर वो मल्टीपल बन रहा है उस डिविजिबल मतलब उस नंबर का, तो वो उससे डिविजिबल हो जाएगा. अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं. 13 के बाद से जो भी अभी तक मैंने रूल्स डिस्कस किए हैं आपसे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है, यूनिट डिजिट को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट आ जाने के बाद में आपको बचे हुए नंबर्स में ऐड करना है, ठीक है, और देन हमको चेक करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं. अगर वो सम डिविजिबल हो जाता है इट मींस जो नंबर था उससे वो डिविजिबल हो जाएगा. मींस जैसे हम यहीं पे बात कर रहे हैं, तो अब हमने यहाँ पर इसके लिए कौन सा नंबर सिलेक्टेड है, 7. यूनिट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग नंबर में 7 को ऐड किया, 3 4 5 बना. अब हम स्टिल आई एम कंफ्यूज. अब हमें नहीं पता कि 3 4 5 मल्टीपल है 23 का, नहीं, बिकॉज 23 का टेबल भी लर्न होना बहुत आसान बात नहीं याद होता है, इट्स कॉमन. सो वी डू द स्टेप अगेन, वी फॉलो द सेम स्टेप अगेन, देन 7 5 are 35, देन वी ऐड 5 4 9. अब यहां पर है पता लगे 69. यस, 69 when we multiply 23 by 3 times, so we get 69. It means 69 is divisible by 23. ठीक है, so the number which given on the top, और the number हमें given था, sorry, वो 23 से divisible होगा. Let's move to the next divisibility rule, and the last divisibility rule is 29. So if you want to check the divisibility by 29, so multiply the unit digit by 3. So multiply the unit digit by 3 and add to the remaining number. Means 18328. This number 18328 is divisible by 29 or not? So what we will do, we will thrice the unit digit. Means जो unit digit है हम उसको 3 से multiply करेंगे, okay, and add to the remaining one. So 8 3s are 24, add to the remaining number. 4 plus 2 is 6, 2 plus 3 is 5, and 8 and 1. Still I am not able to reply. So what we will do, we will follow the steps again. Multiply by 3, 6 3s are 18, add to the remaining number. What we will get, 8 plus 5 is 13, 3 carry 1, 8 1 9 1 10 0 carry 1, then 2, 203. You are able to reply. Okay, first of all अब अगर आपको यहां से क्रॉस चेक करना 203, ठीक है, फर्स्ट थिंग, पहली बात तो अब हमें 29 का टेबल नहीं लाना होगा, ठीक है. अब हमें ये कंफर्म करना है कि 203 इज द मल्टीपल ऑफ 29 और नॉट. सो वी फोकस ऑन यूनिट डिजिट. हम यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे. हमें क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पे 3. 9 के टेबल में यूनिट डिजिट पे 3 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में. 7 9 are 63. So we just try to check. 7 9 are 63, 3 carry 6, and 7 to the 14, 14 plus 6 is 20. 203. It means 203 is divisible by 29 in 7 times. It means the given number is divisible by 29. But if you still confused, so हम स्टेप को फिर से फॉलो कर लेंगे. 203 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ओके, 3 3s are 9, ऐड करेंगे, देन 29. ठीक है, इट्स क्लियर. इट्स ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स अप टू 29. आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा. अगर आपने सीखा है सो प्लीज share the video with your friends, relatives and neighbors.
बिकॉज बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो गया ये, बिकॉज इट्स अ लॉन्गेस्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी तक मैंने इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाई है। सो वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक। यस, टुडे आई एम सेइंग क्लियरली, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड ये वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू टू ऑल, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।